Hello and welcome to the YouTube channel of Vidhi Culture. Today we are here with another session of the DU LL.B previous year paper discussion. So this is part 2 of our discussion. This is our part 2. So in part 2 again we will discuss certain questions from the previous year legal questions. So let's look at the very first question here. This is a principal facts question. And the principle is whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consents moves that property in order to such taking is said to commit theft. So basically it means that if somebody takes the property that is movable in nature dishonestly out of the possession of others person, मतलब किसी की बिना मर्जी के डिसऑनेस्टली अगर आप उसकी प्रॉपर्टी उसके पोजेशन से ले लेते हैं बिना उसके कंसेंट के, तो उसको हम थेफ्ट की कैटेगरी में रखते हैं और उसे हम कहते हैं दैट दैट पर्सन हैज कमिटेड थेफ्ट. So this is the basic principle given under this question. Now look at the facts. Facts of the question. A sees a ring belonging to Z lying on a table in Z's house. A जो यहाँ पे है उसने देखा कि एक रिंग रखी है टेबल पे, जेड लाइंग ऑन द टेबल इन द जेड्स हाउस, जेड के हाउस पे. नॉट वेंचरिंग टू मिस अप्रोप्रिएट द रिंग इमीडिएटली फॉर फियर ऑफ सर्च एंड डायरेक्शंस. उसको डर था कि अगर मैंने अभी इसके साथ छेड़छाड़ की तो हो सकता है चेकिंग हो और फिर मैं पकड़ा जाऊं. इसलिए A hides the ring in the place where it is highly improbable that it will ever be found by Z. और वो ऐसी जगह छुपा देता है वहीं पे जहां की इम्पॉसिबल है लगभग कि भाई कोई भी कभी सोच पाएगा कि वो रिंग वहां हो सकती है और ढूंढेगा. With the intention of taking that ring from the hiding place and selling it when the loss is forgotten. और इसकी प्लानिंग ये थी कि जब लोग भूल जाएंगे कि भाई ऐसा कोई लॉस हुआ था और ये सारी चीजें जब भूल जाएंगे तो फिर वो वहां जाएगा और उस रिंग को लेकर उसे बेच देगा. सो दिस वाज द प्लानिंग ऑफ दिस पर्सन इन दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है, ए हैज कमिटेड, किस तरीके का ऑफेंस इसने कमिट किया है या नहीं किया है, दैट वी विल सी हियर. So it says theft at the time of first moving the ring. तो जब उसने पहली बार जो रिंग थी उसको अपनी जगह से मूव किया उस टाइम ही उसने थेफ्ट कमिट किया था एज पर द फर्स्ट ऑप्शन. देन थेफ्ट एट द टाइम व्हेन ही कम्स बैक टू टेक द रिंग, या फिर जब वो वापस रिंग को लेने आया होगा तब उसने थेफ्ट कमिट किया. और द थर्ड ऑप्शन इज नो ऑफेंसेस कमिटेड, or the fourth one, that is criminal misappropriation. So what is the right answer under these options? So here first one is the right answer, which says that theft at the time of first moving the ring. जब उसने पहली बार रिंग को वहां से अपनी जगह से हिलाया था, दूसरी जगह शिफ्ट किया था, at that time only he committed theft. And when we talk about theft, in which section it is mentioned of IPC? It is mentioned under section 378 of IPC, and punishment for the same is given under section 379. So this was about the theft and the first question here. Now moving on to the next question, which says only the party who has suffered damage or injury can approach the court of law. इसका मतलब कि जिस पार्टी को डैमेज हुआ है, जो जिस आदमी ने डैमेज को सहा है या फिर इंजरी को सहा है, वही सिर्फ कोर्ट को अप्रोच कर सकता है फॉर द रेमेडी. फिर कहता है द अबव रूल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर. सो इज इट लोकस स्टैंडाई, और इज इट मॉडस ऑपरेंडी, और इट इज क्विड प्रो को, और इट इज status quo. So the right answer is locus standi. Why? Because the locus standi means legal capacity to sue or approach court of law.
Then the next is the what do we mean by modus operandi? Right answer is locus standi, but we must know what is the meaning of modus operandi. So modus operandi, nothing but it is manner of doing that act. Manner of doing the act. Then if you look at the next one, that is quid pro quo. So this means this for that. This for that. Then comes the next one, that is status quo. What do we understand by status quo? Status quo means last actual and uncontested state of affair. Means जो जैसा था वैसे ही, means status quo. So the right answer in this particular question is locus standi, but I have also told you the meaning of different options given here. Now moving on to the next question, that is remedy of restitution of conjugal rights is available under the Hindu Marriage Act 1955 to whom? Whether it is given to husband only, wife only, both wife and the husband, or divorced wife only. So what is the right answer here? The right answer is both wife and the husband. So the right answer here is both wife and the husband. So under the RCR, it is available to both wife and husband. And this restitution of conjugal rights, it is mentioned under Section 9 of Hindu Marriage Act 1955. We also call it RCR, Restitution of Conjugal Rights. So moving on to the next question. Next question says that Gita is Jain, Shyam is a Hindu. The marriage can be solemnized under. अगर गीता एक जैन है, जैन कम्युनिटी से बिलोंग करती है, श्याम जो है वो एक हिंदू है, तो इनकी मैरिज किस लॉ के अंडर में हो सकती है यहाँ पे? So the first option is Special Marriage Act 1954, Hindu Marriage Act 1955. Then it says either one or two, and the fourth one is neither one nor two. So what is the right answer here? Yes, it is the option number 3, that is either one or two, because they can marry under Special Marriage Act also and the Hindu Marriage Act also. So 3 is the right answer here. Now moving on to the next question, that is which one of the following is not a source of Muslim law? And the options are Quran, Sunnat, Shruti, and Ijma. So the right answer here is option number 3, that is Shruti. Shruti is not a source of Muslim law. Then the next question, it says in which of the following cases, in जो नीचे दिए हुए केसेस में से कौन सा ऐसा केस है, has the Supreme Court of India made it mandatory for candidates contesting elections to the legislatures and their spouses to declare their source of income at the time of filing nominations? किस केस में इनमें से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि भाई ये एक मैंडेटरी कंडीशन होगी कि जो भी इलेक्शन कैंडिडेट जो है कंटेस्ट करना चाहते हैं लेजिस्लेचर में, वो और उनके जितने भी स्पाउसेस, मींस इफ यू नो द मैन इज कंटेस्टिंग द इलेक्शन, देन द वाइफ, and if the wife is contesting the election, then the husband, they must declare their source of income at the time of filing nomination. जिस टाइम नॉमिनेशन फाइल करने जाएं उस टाइम अपने सभी इनकम का सोर्स वहां पे डिक्लेयर करें. So this was given under which case? So the first option is Lok Prahari versus Union of India. Second one is Jan Chaukidar versus Union of India. Third one is People's Union for Democratic Rights versus Union of India. And the fourth one is People's Union for Civil Liberties versus Union of India. So the right option in this question is the first one, that is Lok Prahari versus Union of India is the right answer here. Then moving on to the next question. In which of the following cases did the Supreme Court of India hold that seeking votes in the name of voters' religion amounts to corrupt practice? इनमें से किन केस में किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि अगर आप वोट जो है
वोटर से मांगते हैं उनके रिलीजन के नाम पे, तो फिर ये एक करप्ट प्रैक्टिस कहलाएगी। ऐसा किस केस में कहा गया था? सो द ऑप्शंस आर अभिराम सिंह वर्सेस CD कमोशन, देन प्रभाकरन वर्सेस जयराजन, देन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, S Subramanian Balaji versus Government of Tamil Nadu. So the right option in this question is the first one, that is Abhiram Singh versus CD Commercial. Now moving on to the next question, and that is question number 8. It says the usual process of valid agreement includes the different stages, that is acceptance, agreement, consideration, and offer. So arrange the above in sequence and choose the correct answer from the options given below. तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे एक सही ऑर्डर में लगाना है और आंसर करना है. सो इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, अगर हम देखें सबसे पहले क्या है, एक्सेप्टेंस है, एग्रीमेंट है और कंसिडरेशन है, ऑफर है. तो अगर हम देखें तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट जब एक फॉर्म होता है तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले देयर इज अ ऑफर. सबसे पहले होता है ऑफर, देन होता है ऑफर का acceptance, then comes the consideration part, and then becomes a agreement. So basically we can say that the right answer can be like, offer is given under D, then acceptance given B, consideration is C, and agreement is B. So agreement is B and acceptance is given under A. So DACB, DACB, that is option number 3 is the right answer in this particular case. Then the next question, that is from whom is an offer addressed to when a product is kept on the shelf of a shop with the price tag attached. इस क्वेश्चन में कहता है कि जब भी आप कहीं पे जाते हैं, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, वहां प्रोडक्ट जो है वो शेल्फ पे रखे होते हैं, तो ये किसको एड्रेस कर रहा है ऑफर? दिस ऑफर इज एड्रेसिंग टू whom? So the options are shopkeeper, shop attendant, manufacturer, or customer. So the right answer of this question is the customers, because shelf पे जब वो रखा होता है तो it is actually giving some offer to the customer. Customer को लिए एक ऑफर है कि आप इस प्राइस पे इस चीज को खरीद सकते हैं. Then the next question, that is again a legal principle in the fact question. So the legal principle given here is any contract made for an unlawful consideration is void in law. कहता है कि जब भी कोई unlawful consideration होगा तो वो contract क्या होगा, वो void कहलाएगा law के अंदर. ये है principle. And the fact of this question, Mr. X agrees to pay ₹1,000 to Mr. Z for giving false evidence in the court. अगर कोर्ट में Z जो है अगर गलत बयान दे दे या गलत एविडेंस दे दे, तो फिर जो है X जो है कहता है मैं तुम्हें ₹1,000 दूंगा. तो क्या ये सही है या गलत है? सो व्हाट आर द ऑप्शंस गिवन हियर? You have to answer according to the principle given in the question. So the first option is the contract is voidable at the option of Mr. Z due to the risk involved in it. ठीक है, जो रिस्क इन्वॉल्व है उसके तहत जो है यहाँ पे ये voidable होगा, ऐसा कहते हैं ये कि voidable होना चाहिए. सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्ट इज void ड्यू टू अनलॉफुल कंसिडरेशन. दूसरा ऑप्शन कहता है कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये void है बिकॉज जो यहाँ पे कंसिडरेशन है वो क्या है, एक तरीके से अनलॉफुल है. Then third one is contract is valid and Mr. Z must perform it. थर्ड कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है और Z को यहाँ पे उसे परफॉर्म करना चाहिए. Then fourth option is the contract is voidable at the option of Mr. X. कहता है कॉन्ट्रैक्ट जो है voidable है किसके ऑप्शंस पे, Mr. X के ऑप्शन पे. So the right answer of this question is option number 2, that is the contract is void due to unlawful consideration, because giving a false evidence is a unlawful consideration. ये एक unlawful चीज है जो उसको करने के लिए कहा जा रहा है, and as per the principle it will be a void contract. So these were the 10 questions from the previous question in this part 2 of this
this session of previous year questions of DU LLB. We will come up with another session with respect to the previous year questions. So stay tuned with us or subscribe our channel for more updates. Thank you so much. Thank you for joining.